Hello everyone, this is Jinsi, your unfiltered voice in the world of cinema, trailers, series and everything in between. Today we are going to review about the latest film which was released on OTT platform called Z5. The film is called Bhagwat Chapter 1 Rakshas. It is a 2-hour crime-based thriller movie and it stars Arshad Varsi, Rajkumar, whom we have seen earlier as a good boy in many of the OTT series like Kota Factory, TVF Bachelors, Panchayat. This time he plays the character of a villain. The film is directed by Akash. This is his second directorial film. First film was Emotional Atyachar. Now let me give you a gist about the film. What is the story about? This film is based on a real story, the infamous Cyanide Mohan case. So the film starts with a female called Poonam going missing from a small village in Uttar Pradesh. That is when our hero enters, Arshad Varsi. So Arshad Varsi plays the character of a cop, Vishwas Bhagwat. He has the similar characteristic or the typical characteristic of cops in Bollywood films, the same anger temper issue. So because of his temper issue, he gets transferred to this small town in UP, and as soon as he comes here, he gets into this case finding the missing girl Poonam. As he unfolds the case, as he gets into the case, he comes to know that there are several other girls just like her who has gone missing over a period of year or more than that. While investigating the case, we encounter the villain of the film, who's played by Jitendra. His character's name is Samir, who portrays himself as a professor, but nowhere in the film is shown him teaching or he being in the college classroom, anything sort of that. He claims to be a professor. Now, what does Samir do? ये सारे लड़कियों को अपने प्यार के माया जाल में फंसाता है एंड उनको फेक promises देता है शादी का. What is the female to the hotels, spends the night with these females. Next day he kills the female with a cyanide and उनके पास जितने भी ornaments है वो लेके ये भाग जाता है. Next day the same story continues. Hunts a new girl, repeats the same pattern and इसका chain ऐसे चलते रहता है. After a long wait, Arshad Varsi finally decodes who is the person behind all this thing and catch hold of Samir. This time Inspector Vishwas Bhagwat doesn't use his physical strength, ये अपना mental strength use करता है. तो ये क्या करता है कि इसको पता है कि ये नॉर्मल क्रिमिनल बंदा जैसे नहीं लग रहा है. He looks to be very smart and he looks to be a little psychopath. तो ये दिमाग से उसका खेलता है, तो वो पूरा दिमाग से तोड़ के रख देता है. फोर्स कर देता है कि वो सामने से पूरा सच्चाई बता दे. समीर eventually accept all the crimes what he does and then he's being taken to a court. वहां पे अपना केस खुद लड़ता है. Just he was about to win the case, that's when one of his victims, thought to be dead, comes in front to testify against him. That is the gist about the story. वैसे ट्रेलर में सब कुछ बता ही दिया है, कौन हीरो है कौन विलन है, तो there is no suspense to this film. The trailer is enough. मूवी देखने की जरूरत नहीं है ऐसे मुझे लगता है. Now coming to what worked for me and what did not work for me. I'll talk about the positive side because there are hardly any. The best part about the film was the cast. Arshad Varsi was a very good actor. Jitendra, again, a very good actor whom we have always seen him playing the good guy. This is the first time where he's playing a role of a negative character, which he pulled out very well. 1% भी वो बंदे ने नहीं छोड़ा. वो कैरेक्टर के अंदर इतना घुस जाता है. द वे ही डिलीवर्स द डायलॉग, उसकी जो हरकतें हैं, वो कैरेक्टर को पूरा निचोड़ के पी लेता है. And you will actually start hating him. That's when we know that he played his part. He did a very good job. Similarly, Arshad Varsi, एक stereotype इमेज सेट रहता है एक फिजिकल अपीयरेंस कॉप्स को देखने का फिल्म्स में. अरशद वारसी लिटरली डजंट फिट्स द बिल इन द सेंस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस बिकॉज ही इज शॉर्ट एंड हाई, ही इज शोन लिटिल प्लम्पी. अरशद वारसी ने अच्छा खासा वेट गेन किया है, बट देन व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग ही हैज डन हिज जॉब. आई थिंक ही इज नॉट बीन यूज्ड प्रॉपर्ली, बट उसने अपना पार्ट बहुत अच्छे से प्ले किया है. दैट्स ऑल अबाउट द गुड पार्ट अबाउट द फिल्म. नाउ कमिंग इनटू द नेगेटिव साइड, भर भर के है. What did not work for me is
everything and anything except the cast. आप जब ये फिल्म देखोगे ना तो आप लोगों को बहुत सारे लूप होल्स दिखाई देंगे इस फिल्म में. To begin with, the film did not have enough substance to hold your attention. The story, the screenplay, the direction, the editing, everything was weak. The biggest flaw which I found is ये जो negative character है was played by समीर. उस कैरेक्टर को उन लोग ने ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, उसका बैक हिस्ट्री दिखाया नहीं है, वो ये क्राइम क्यों करता है उस पार्ट को भी एक्सप्लोर नहीं किया है. सो काइंड ऑफ फील्स वेरी इनकम्प्लीट. जनरली जब हम लोग एक क्राइम बेस्ड शो या सीरीज या फिल्म्स देखते हैं तो उसमें जो नेगेटिव कैरेक्टर होता है या जो विलेन रहता है उसका एक बैक स्टोरी रहता है या तो उसका एक मोटिव रहता है कि वो क्यों करता है ये सब. वो चीज को उन लोग ने यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं किया है. सो दैट इज द बिगेस्ट फ्लॉ. Also, I feel there were a lot of unnecessary scenes which could have been edited out in the editing table. They simply stretched the movie just to match the 2-hour timing. In fact, they should have established the story well. Unnecessary, slow scenes रखने से अच्छा उन लोगों को characters को बहुत अच्छे से explore करना चाहिए था. Even the first half an hour of the movie, 2 घंटे का ही मूवी है, पहला half an hour इतना slow जाता है, you will literally like start thinking whether you should watch this film or not. The film picks up the pace only after half an hour. वो भी इतना ज्यादा पेस नहीं पकड़ता है. It just picks up a little. थोड़ा सा गियर उठा लेता है फिल्म. Also to talk about the music of the film, the background also was not good, not interesting at all. Even the songs, there were hardly 1 or 2 songs in the film. That also did not match the criteria of a film. फिल्म का एक जो म्यूजिक होता है वो अलग होता है. म्यूजिक जो इसमें यूज किया है, it sound more or less like series or a OTT series type music. It was not meant for a film. Also एक बिल्डअप स्टोरी पे नहीं दिया है. हम एक सस्पेंस फिल्म देखते हैं या तो एक क्राइम फिल्म देखते हैं तो उसमें एक बिल्डअप रहता है. स्लोली हर एक चीज रिवील होता है या तो लोगों को थिंकिंग पे डाल देता है कि क्रिमिनल कौन है. यहाँ पे पहले से हमें पता रहता है कि यहाँ पे विलेन कौन है. सो बिल्टअप नहीं है, सस्पेंस नहीं है. सो जब ये फिल्म का ट्रेलर आया था, आई वॉज सो एक्साइटेड टू वॉच दिस फिल्म. द ट्रेलर लुक्ड वेरी प्रॉमिसिंग बट द मिनट आई वॉच द फिल्म आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड. Back to back, Bollywood is coming up with very bad films. Also, a fun fact, basically ये मूवी बनने से पहले इसका एक ऑडिबल ऑडियो शो आया था जिसका नाम था साइको सैया. It seems that was more interesting और वो बहुत डेप्थ में उन लोग ने स्टोरी को एक्सप्लेन किया है जहाँ पे मूवी नहीं कर पाया. आई डोंट नो, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है. आई एम नॉट श्योर इफ यू ऑल अग्री टू दिस. मैंने ये हाल फिलहाल में ये नोटिस किया है कि जितना भी OTT प्लेटफॉर्म में सीरीज आता है ना, शोज आता है जो 6 एपिसोड 700 एपिसोड के होते हैं, पर एपिसोड इज ऑफ 40 minutes 1 hour also, that happens to be more promising and more good and more interesting to watch rather than the films which are coming out. तो इन लोग 2 घंटे की एक फिल्म नहीं बना पाते बट सीरीज उन लोग जो एक सीरीज जो 1 घंटे के होते हैं, 40 मिनट के होते हैं, वो उसमें खेल जाते हैं. सो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस. आई होप दे रियली वर्क ऑन सम गुड फिल्म्स. ऑन द अदर साइड्स इफ यू सी, साउथ फिल्म्स आर डूइंग रियली वेल. They're coming out back to back with very good concept, good story, good films. But Bollywood, really sorry, very, very disappointed with this film. I had very high hopes watching the trailer, but it really disappointed me. I'm not at all happy with this film. So my rating would be 2.5 out of 5. According to me, what could have been more better? Good storyline or good screenplay, good direction, tighter editing, and more impactful ending, and a deeper understanding or a more exploration into the villain's character. So that's it for today, guys. Thank you so much. If you guys like my review, please do subscribe, like, share, and वो घंटी का बटन दबाना भूलना मत. Otherwise, you will not get notified when I post my next review. Until I come with my next review, do this.